Welcome students, this is Manjubala Bhardwaj. Today we are going to do a topic from class 10th, book Beehive, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. In this poem, tiger is caged in a zoo. It is not in its natural habitat, and poet is describing the condition of a tiger when it is in zoo and when it is outside the zoo. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He is considered as most important Welsh writers of the post-war period, and his literary works have won many prizes. Let us start from theme of the poem. The major theme of this poem is the value of freedom. Tiger is a symbol of people who want to be free but are unable to free themselves of their metaphorical cage. As they live their life with the cage, they begin to lose their will. Will means ichha, to be free, and the cage becomes a part of their life. The cage is a representation of situations that hinder our freedom. It can be social, financial, physical, or any other form of freedom. The cage is a symbol of the conditions that restrict it. The poet uses this poem to show the people how we are like a tiger living in a cage that hinders us. Before we start, let us see new word used in poem. First word is stalks. Stalks means follows, पीछा करना. Vivid, bright color. Pads, paws of the tiger. Rage, anger, गुस्सा. Lurking, to be hidden as to wait for your prey. छुप कर शिकार की wait करना. Snarling, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स. जो साउंड वार्न करने के लिए एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं स्नार्लिंग. बेयरिंग, अनकवर्ड. फैंग्स, शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के जो शार्प दांत होते हैं तीखे वाले उन्हें कहते हैं फैंग्स. पेट्रोलिंग, टू गार्ड, गश्त लगाना. Let's begin line by line explanation of the poem. Stanza 1. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He stalks. Stalks mean चलना. In his vivid stripes, जो bright colored skin है, तो वो अपनी skin में in few steps, कुछ ही कदम चल पा रहा है because he is in cage. He stands for tiger here. तो वो कुछ कदम चल पा रहा है on pads of velvet quiet. उसके जो paws हैं वो velvet जैसे हैं, इस वजह से no sound is produced by him in his quiet rage. But as he is locked in cage, he is very much in anger. Let us check literary devices of stanza 1. First of all, rhyme scheme. Rhyme scheme is ABCB because cage and rage both are rhyming with each other. Next, personification. आपने देखा ही होगा, tiger is personified here. The tiger, because the poet refer him as he. Next poetic device is metaphor. Tiger's paws are compared with velvet pads. Enjambment. Sentence is continuing to next line without any punctuation mark. That's why the device is enjambment. Next device is imagery. Poet tries to create an image about the tiger. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Next, consonants. Use of S sound. Stalks his stripes. Consonants क्या होता है? जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड रेपिटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, बट नॉट इन एडजेसेंट वर्ड्स. एजोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड आई, वेरी प्रोमिनेंट इन हिज विविड स्ट्राइप्स. नेक्स्ट डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन. यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑपोजिट इन मीनिंग. आपने देखा होगा क्वाइट, रेज.
क्वाइट का मतलब शांत होता है, रेज का मतलब एंगर होता है. When these two are used together, the poetic device is oxymoron. Let us start stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. In this stanza poet says he should be lurking in shadow, कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो टाइगर वो छुप कर अपने प्रे का वेट कर रहा होता नियर वाटर बॉडी, जो जहां से कि कोई डियर, प्लम डियर मीन्स एक हेल्दी डियर वहां से गुजरता और जो टाइगर था वो उस पर अटैक करके ही वुड हैव the deer as his food, but as he is in cage, he cannot do so. Literary devices of stanza 2, rhyme scheme ABCB, same as in stanza 1, grass and pass only rhyming with each other. Next device is enjambment, line continues to next line without punctuation mark, sliding through deer pass. Alliteration, next poetic device जो है alliteration है, use of sound P at the start of two words, plum pass. Next is imagery. The poet has tries to create an image of tiger's activities lurking in shadow. तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से इमेज क्रिएट कर पाए हैं, हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता. That's why device is imagery. Let us move to third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his five fangs, his claws, terrorizing the village. Here poet says that if the tiger would have been free, अगर वो free होता, he would have snarled around the houses located at outskirts of the forest. जो फॉरेस्ट के आसपास के घर थे वहां पर वो स्नार करते हुए घूम रहा होता. He would terrorize people with his sharp tooth and claws. लोगों को डराता अपने टूथ से और अपने क्लॉज से, पंजों से. This would create fear among the people living in the villages. और terrorizing मतलब creating fear. तो इससे क्या होता, जो विलेज के लोग थे वो डर जाते और उनमें डर बैठ जाता. Let us check literary devices used in stanza 3. A rhyme scheme ABCB. A rhyme scheme is followed as village, क्योंकि दो ही वर्ड इसमें भी राइम कर रहे हैं. That's why again ABCB is the rhyming scheme of stanza 3. Enjambment, line continues to next line without punctuation mark. He should be snarling around houses at the jungle's edge. Next is onomatopoeia, using words which denote sounds. जब भी कोई वर्ड्स हम यूज करते हैं जिससे साउंड की डिनोशन होती है तो जो पोएटिक डिवाइस है वो ऑनमेटोपिया होता है. नेक्स्ट एजोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड ओ एंड आई, शुड अराउंड हाउसेस, बेरिंग हिज वाइट हिज. इन सब में ओ और आई साउंड है वो बहुत प्रोमिनेंट है. दैट्स वाई एजोनेंस. Next device is consonants. Use of consonant sound S, his, fangs, his, claws. Next, let's start stanza 4. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. In this stanza, poet says कि जो टाइगर है वो कंक्रीट मीन्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड स्टोन्स, सेल मीन्स केज, तो वो केज के अंदर लॉक्ड है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत जो है वो सारी बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इसलिए वो सिर्फ अपने केज में ही फ्यू स्टेप्स चल पाता है. इग्नोरिंग विजिटर्स, एज ही इज केज्ड ही कैनॉट अटैक विजिटर्स, इसलिए वो उनको इग्नोर कर रहा है. Let us check literary devices of stanza 4. A rhyme scheme ABCB.
bars visitors. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं. टाइगर एक एनिमल है. एनिमल्स के लिए जनरली हम इट यूज करते हैं, बट यहाँ पर स्टेंजा में ही यूज किया गया है, पोएट ने ही यूज किया है, तो इसीलिए द टाइगर इज पर्सोनिफाइड हियर. नेक्स्ट इज एजोनेंस. यूज ऑफ वॉवल साउंड. ई, ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल. E is very prominent. Consonants. Use of consonant sounds S. His strength, bars. Alliteration. Use of sound B at the start of two words. Consonants और alliteration में क्या difference है कि वो तो beginning of word में होता है. जब alliteration repetition of consonant sound अगर words की beginning में हो तो alliteration होता है, और consonants में कि वो जो word है वो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कहीं पे भी रिपीट हो सकता है मोर देन 2 टाइम्स. इन स्टेंजा 5 he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet says that in the night tiger hears the sound of patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at night. So, in the night, the tiger hears the sound of these cars. बस इन्हीं कार की आवाज से सुन रही है. He then stares at the shining stars with his shining eyes. वो अपनी shining यानी कि bright eyes से bright stars की तरफ देख रहा है. The poet wants to say that the tiger is sad, and as he is confined in the cage, वो केज के अंदर बंद है, so he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in the night. इसीलिए वो रात को stars की तरफ देख रहा है and tries to divert his thoughts towards them. और अपने जो sad thoughts है वो divert करने की कोशिश कर रहा है by looking at the stars. Literary devices of stanza 5. Rhyme scheme ABCB. हर stanza की rhyme scheme ABCB ही है. Rhyming words are cars, stars. Next device is enjambment. Line 3 में जो sentence है single sentence is running without any punctuation mark. That's why poetic device is enjambment. Alliteration. Next device used is alliteration. Use of sound H in the starting of two words. He hears. Then next device is assonance. Use of I sound with his brilliant. डिवाइस. आज हमने किया थीम ऑफ द पोएम, देन आई टोल्ड यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड न्यू वर्ड यूज्ड इन द पोएम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. इफ देयर इज एनी डाउट, आस्क बाय राइटिंग इन कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you again in the next video.